ଏବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି କକରୋଚ ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ଜେଏନଜି ହୁଅନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶରତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଶେଷରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଲେ, କ'ଣ ରହିବ ରିଆକ୍ସନ୍? मोदी सरकार सामग्रिक विफलता सी होती प्रथम शिकार। धर्मेंद्र प्रधान प्रथम शिकार हेले मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार जो सामग्रिक विफलता या परे परे इस्तफार सुओ एवं शेष ये सरकार पतन मु भविष्य देखुचे एवं निश्चित भाव में या परवर्ती सब आंदोलन आरंभ हो एवं जो कथा धर्मेंद्र प्रधान जितेबाला गोटे दल अधर्मर पथ बाछि नब सेतबले अनेक धर्मेंद्र बलि पड़े एवं सामग्रिक विफलता खाली तो नुह ये अन्याय बढ़ीगला अधर्म बढ़ीगला भारतीय जनता पार्टी सरकार जो कि धर्मेंद्र प्रधान बलि पड़े। इस्तफा गोटे प्रकृत में इस्तफा देदेले समस्यार समाधान हो कि निश्चित भाव में केवल धर्मेंद्र प्रधान इस्तफार समस्यार समाधान हम ना। धर्मेंद्र प्रधान से पापर से विभागर मुख्य थे तेणु नैतिकता दृष्टि से इस्तफा दे था एवं भल शोभनीय होता पूर्वर एभली परिस्थिति सृष्टि हो न एवं जो थे कि पिला माने आत्महत्या कले पिला माने जंतर मंतर रहीकि जो माड़ खाइले जो माने जो हानि है बहुत शारीरिक मानसिक आघात दिगला ताहले एक कथा हो न था जदि धर्मेंद्र प्रधान प्रथम इस्तफा दे था नैतिक दायित्व नहीं किंतु से नवा फल एवं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार रहा धर्मेंद्र प्रधान इस्तफा दौले कि चाहूले कि नहीं मुझे कहीपर नहीं किंतु दल तरफ इस्तफा दवाई कहुई नाला एवं विलंबर कहगला जोटा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तफा देले एवं इस्तफा देवार एकमात्र कारण हूँ जे ये सरकार विफलता पर विफलता एवं लोक आपको बर्दास्त कले नहीं एवं छात्र समाज युव समाज आपको क्षमा देले नहीं एवं धर्मेंद्र प्रधान शेष तार शिकार हेले। सतब आप एक कथा कहे कि जो भाया भाव में बर्तमान स्थिति रे जे पेपर लीक रे 22 जन छात्र आत्महत्या करवा पेपर लीक को लेकिन आंदोलन सारा देश में मुंड टेकिबा विरोधी दल संडुआसी आक्रमण करवा कोटि ना कोटि केंद्र सरकार को अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि कला एवं शेष धर्मेंद्र प्रधान इस्तफा देले किंतु धर्मेंद्र प्रधान ओडिशार प्रतिनिधित्व करथिले ओडिशा पई भी गोटे क्षति भी ओडिशा पई खाली क्षति नुहे ओडिशा पई लज्जा एवं ओडिशार जने मंत्री जाइकी एभली भाव में हीन प्रवृत्ति से निवृत्त हेबे व्यक्त रे एभली हीन प्रवृत्ति रे तेणु से कथा ओडिशा लोक बर्दास्त करेंगे ना बर ओडिशार सम्मान हानि है बहुत प्रकार एवं ओडिशा लोक लज्जित हबार बहुत से तार परिणाम है। भल निष्पत्ति नेले कि धर्मेंद्र प्रधान विलंबर ये निष्पत्तिर किसी अर्थ ना किसी मूल्य ना विलंबर नेले एवं धर्मेंद्र प्रधान जी भूल ना जी भूल हूँ दलर एवं दलर सरकार नरेंद्र मोदी सरकार अमित शाह सरकार से हूँ बहुत बड़ चक्रांत थिला जे किभली भाव में आम सप्रेस करूँ जिते आंदोलन सप्रेस कर पारे ना सेतबले बाध्य होकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तफा देले बाध्य होकि इस्तफा देवा स्वेच्छाकृत भाव में इस्तफा देवा भितर बहुत तफात अच्छी शुणुले गायत्री जो कथा जो भाव में पूर्वतन मंत्री शरत राउत कहते जे बाध्य होकि केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तफा देइछन्ति। I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today, this has been proved by our students, by our young people.
And they have stood there regardless everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students, but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now, I think this is the beginning, but I'm really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years, I've thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice.